Well, good afternoon, everyone. Welcome to the session on one of the important techniques that can contribute to the reliability or inter-rater reliability. Before I take up this session, I would like to seek your opinion on the topic which we are going to deal with, that is rubric. I am pasting a link in the chat box. Kindly click on the link, take 10 minutes, initial 10 minutes you spend on this, or maybe 7 to 10 minutes as you wish, and then we can start with the discussion on the topic called rubric. Okay, out of the 46, 37 people have said that they use rubric, they are familiar with rubric, and almost 40, this is what, 37, and 9 people have said they are not able. So 19 to 20% of the people say they are not familiar with rubric. That means this session is, I would request those who are familiar, they can participate, give their responses wherever they feel like, supplement the matter where it is needed. And my second, first question to you was whether you are familiar or not. And the second question was, which of the methods of assessment you can actually use rubrics for assessing student performance? And here, when I look to the responses, assignment, group discussion, seminars, presentations, term papers, project work, problem based learning, thesis and dissertations, communication skills, teamwork, creative problem solving. All these are the methods of assessment where rubrics can be used. And I find that there are variations as far as the responses of the faculty members are concerned, because even assignment, when we assess or check to make it more reliable so that it becomes more objective, rubrics can be used. Group discussion also, where overall assessment of the performance is carried out, rubrics can help in bringing in objectivity. Likewise, in all others, seminar, presentation, term work, project work, communication, teamwork, all these are the areas or the methods of assessment where there is lack of objectivity if the criterion for assessment is not specified and rubrics are not available. So in this particular session, when I say there is a lot of dissatisfaction with the people, think of when we were students and our assignments or presentations were assessed by the teachers. We also had grudges against our teachers that I haven't got A grade or I haven't got 90, the other person has got 80, his or her presentation was not better than me. Such kind of cribblings go on among the students. And when I ask the people, 20% who didn't use or who are not familiar with the rubrics, you can see here that here, when you look to the people, 20% who are not familiar, answered question 5. Please indicate the extent to which students are satisfied with the assessment. Now, here you can see that this one, they are satisfied. Equal number of people have said they are either most satisfied or satisfied, but there are few people who have said that students are least satisfied. Now, again, if you look, there are percentage of faculty member who have said students are least satisfied. There is one or two persons who are not actually using rubrics for project work, but again, some percentages there
where they agree that students are least इसको क्या हो गया least satisfied. All components you can see. But when you look to the responses of the people who actually use, you can see assignments, a few percentage of faculty have said students are least satisfied. But you can see majority of the people have either said most satisfied or satisfied. Here, there is no one who has said that students are least satisfied. But when it comes to seminar, presentations, term paper, project work, problem based learning, thesis and dissertation, because maybe very few people are taking at the master's level, communication skills, there is faculty who have said that there is least satisfaction among the students. So you can see, even with the use of rubrics, there is not much satisfaction which could be generated, but majority of the students, they are satisfied or most satisfied. So this itself says that if you try to use rubrics, you can bring in more satisfaction among the students. So in this presentation, I'll be focusing on what are some of the purposes which are served by rubrics for the teachers and the students. What do we understand by the term rubric? होता क्या है? Are there different types of rubric? So we will deal with different types of rubric, and then we'll take up what are the steps involved in the process of developing rubrics, and we'll give you a few examples of rubrics. Now, here, when you pay attention to, this was the question in your Google form, that what are some of the purposes served by rubrics. And here you can see that the very first 72% of the faculty members who are familiar with this rubric, they said that you can communicate your expectations to the learners. Very important, because whenever you give an assignment, what is it that you expect from the learner? What kind of the quality you are looking for when a student is likely to submit the assignment? If you are able to clearly convey your expectations regarding the performance, then it is very motivating for the learner, because the learner knows the criteria and he can adhere to that criteria beforehand. From his side, there will be an effort to meet that criteria. So it communicates, if you are able to communicate the expectation, it becomes motivating for the learner to adhere to that criteria and improve upon his performance by bringing in those elements of assessment. Another one you see where 79% of faculty agree that rubrics can be used to provide constructive feedback to the learners. Very important. Because if you only give grade A, grade B, or you simply say your work is excellent, very good, now you are not able to pinpoint the strengths and weaknesses of the learners, whether it is seminar, presentation, communication skill, or it is an assignment. So use of rubric enables the teacher to identify the strengths and weaknesses of the learners, and it tells them which are the components of the criteria which are missing in their performance, so that students can focus on improving those focused aspects in the assessment. Then you third one, where 50% of you have said, 50 or 51%,
to bring in objectivity in scoring. Actually, it should be 100% because when you make use of rubric, then there is lot of objectivity which you can bring in because you specify the criteria, and according to the criteria you try to assess the performance. So there are lesser chances of subjectivity creeping into the scoring of the various methods which you use for assessing student performance. Likewise, when you say objectivity is enhanced, automatically, if there are more than one person who is going to rate the performance of the learner, say, as I'm going to, and there are two other faculty members who are going to evaluate the students' performance in project work. Now, there are three members. Now you say you have given them the rubric, then there will be more, or there will be high positive core chances are there will be high positive correlation between the rating of the various raters. Otherwise, what happen? Again, the interpretation and the subjectivity will be there if three people are rating the same performance. So objectivity, when you bring into the scoring, it leads to both intra-rater reliability as well as inter-rater reliability. So my question was inter-rater reliability, and then to allow learners to si- uh, what reflect on their performance. Now, when you have the criteria and you have provided them the constructive feedback, students are able to identify the weak points, the drawbacks, and they would like to see where they have faltered, and then they would like to improve upon. And another one you can see is that our students who are likely to use these rubrics in future for they can understand what success constitutes. Success in terms of term paper, success in terms of thesis and dissertation, success in terms of communications. What do we understand by that criteria? So in future, when they go to the world of work, they might be designing rubrics for assessing performance at various levels. There they can use this, or they can set their own standards of performance once they understand the criteria for success. Thank you very much for your responses, because all these are the purposes of rubrics when we look at. So, this is in nutshell that we evaluate the performance of the learner, and we can evaluate the performance on certain products. We can provide very focused feedback with respect to the criterion for or criteria for assessment, and in a way we are actually communicating our expectations regarding the performance of the student in various methods which we use for assessing the student performance. And from the student side, you can see they develop a vision of success. They can reflect on their current performance, identify their weaknesses, and they can improve upon their performance in nutshell. Now the question comes, what do we understand by this term rubric? Over to the audience members, because majority of you are familiar with. So any response from your side, the audience members? What do we mean by rubrics? G. Because you are already familiar with G. Manji, Good afternoon, ma'am. good It afternoon. is a it is a criteria to assess the written material or whatever the student has presented. The criteria is given, and we will assess according to that criteria, like Okay. handwriting, grammar, Okay. uh, and other whatever what they have given, their thoughts, their creativity. All these parameters are given, and then they are assessed accordingly. Thank you, So Madam that the Nidal. Thank you so much for giving thank the you. answer. Anybody else who would like to supplement or add something to it? She's right. Hanji, any other answer if the audience has?
No? So, very rightly, Dr. Nigar has said that this is the criteria, or I can simply say that rubrics is a scoring procedure for assessing student performance in all those aspects which you have enlisted, maybe assessment, maybe term paper, maybe seminar, and so on. So when we say it is the criterion, so you can simply pay attention to that these are scoring procedures, and they articulate or they specify criteria for assessment. Now just think in terms, when we are taking a cup of tea, इसे बहुत स्वाद है, और एक को कहते हैं हम स्वाद है, another thing we say is ना ना बेकार है. Now how do we say कि this is a स्वाद है, बहुत स्वाद है या बेकार है? So that means we are trying to use certain criteria for assessing the quality of tea or quality of food or quality of any fabric or quality of any process or any product. अब we in our daily life make use of, without writing or assigning any weightages to various types of criterion for assessment, we use rubrics in our daily life, but there is no black and white printout of that available. But when we are trying to assess human performance, it becomes very important that we have clearly specified criteria for the assessment. And it is not only enlisting the criteria for assessment, but it indicates level of performance. Now, when I said excellent performance, what is it that constitutes excellent performance? What is it that constitutes very good performance? What is it that constitutes good performance? What is it that constitutes satisfactory performance? Or what is it that constitutes poor performance? When I am, as a teacher, going to label the seminar as average or as good or as very good or not satisfactory or unsatisfactory, right? So rubric doesn't simply enlist the criteria, but it also indicates the level of the performance. And if you pay attention to, you will agree with me that any rubric consists of the criterion for assessment. So, having five or four or five aspects which are referred to as key performance indicator. Now, as Dr. Nigar was saying, that when we talk in terms of communication, we can talk in terms of the various aspects of communication. And if you look at on the horizontal x-axis, you can call it an y-axis. So on the x-axis, we have the rating. Are we going to rate the performance of the learner on 3-point scale, 5-point scale, 4-point scale, 7-point scale? Normally, rather than going in for 4-point scale, because it is said if you have 4-point scale, you can simply divide it into yes and no kind, or 2-point rating scale. But if you have 1, 2, 3, 4, 5, there is something a middle point, and then above average and below average kind of performance you can have. So it is, you have different categories of performance. And if you each cell here represents the descriptor. That means if I label this as very good, now this will specify what is it when we will call it a very good performance, when we will call it as a good performance, when we'll call it as an average performance, and when we will call it as a unsatisfactory or poor performance, right? And these cell description is written on the basis of the criterion you have enlisted. Now,
the madam has taken example, so I'll just pick up that same example, the communication, and you are focusing on language. So language also, you can think of variety of criterion. So when I say the vocabulary, so vocabulary is one. So when I will rate vocabulary as excellent or very good, when I'll rate vocabulary as good, when I'll rate it average, and when I'll rate it as poor. So description of the performance is to be written. Just have a look at one of the, I'll just show you. Before that, you understand that rubrics can be holistic rubrics or analytical rubric. Now, when I say holistic rubric, that means I am going to assess the overall performance. Now, as I said, somebody making a presentation or giving a seminar, I am only saying that I am going to rate the seminar. Hello, G. Any question is there? When I say seminar has been presented, holistic means the overall performance in the seminar. So I may decide that I'm going to rate my students on a 5 point scale: excellent, very good, good, satisfactory, and poor, or 3 point scale: good, average, and poor. Now, and then I say excellent means what, and what score I am going to give, or what grade I am going to get, or what is it when I am going to say is excellent. That is holistic. Analytic means that when I am saying seminar presentation, what are the various aspects that need to be present in the good seminar or excellent seminar. So I try to enlist that criteria which should be met by the seminar. And seminar, maybe you have 4 to 5 criteria. Say, when I say seminar, I'm concerned with the topic, so the coverage of the breadth and scope of the topic, maybe one of the criteria. Organization of the content matter may be the another criteria. Third criteria may be the presentation style of the person who made the presentation, or if it is a group presentation, then presentation style. Then maybe we are concerned with the whether the person was able to clarify the doubts or the questions raised by the audience, maybe another criteria. Maybe we are concerned with the rapport the person could build with the audience during the presentation of the seminar. Now, I am trying to enlist the criterion which must be met by the seminar. And this is where we are enlisting the constitute aspects of the performance. Now, just have a look at this when it comes to the open problem based learning, problem solving. So, whether the person has understood the problem clearly, all requirements of the task are included, so the person is getting a 5 score. Demonstrates considerable understanding of the problem. All requirements of the task are indicated or included. 3 marks when he demonstrates partial understanding, and most requirements are. Now, see, complete understanding, considerable understanding, then partial understanding, then the 2 marks, little understanding, and 1 mark when there was no understanding, and 0 if there is no response to the task given. And second component was whether all requirements were included. So if all requirements are included in both cases, but there is partial or considerable understanding, when most requirements are met and there is partial understanding, 3. So this is an example of holistic rubric
where you are going to evaluate the overall performance of the learner with respect to the open ended problem. This is an example of analytic rubrics. Now, here you can see that if number of people are going to rate the same performance, then it is very, very important that we prepare analytic rubric, and so that there is correlation between the rating given by the different raters, so inter-rater reliability will be high. And here you can see that the you can also communicate to the outside world. You can read here, outside audience will be examining rubric scores, so they can understand the kind of feedback that is available to the learner, and what is it that is a strength of the learner, and what is it that is a weakness of the learner. Say for example, on criterion 1, I am getting, say, developing. Now, what does developing means? Developing means that you are still trying to move towards the mastery of the performance. And if you exceed the level of the performance, you are exemplary, right? So it tells you that you have not actually reached the mastery level. So you need to uh, make effort to reach the mastery level. And you can also classify rubrics into general and specific. Now, when I say general, that means it is applicable to more than one method of assessment. We prepare, say, even if you're going for assignment checking, or you are going to assess the term paper, or you are going to assess the presentation or seminar, you have a rubric which has been prepared, which can be used across the methods of assessment. That means you are going for your general rubric would be more when it is holistic in nature rather than analytic rubric, because analytic rubric will go for the component or key performance indicator. So specific is that you have rubric for one particular method of assessment. Assignment के लिए अलग, term paper के लिए अलग, thesis and dissertation के लिए अलग, and so on. So it is the choice of the department if they would like to go for general. That means they only classify excellent performance, very good, good, satisfactory, and poor, or good, average, poor. 3 point scale is used, and all performance of the students with respect to assignment, term paper, seminar, presentation is classified into three categories. You can prepare that kind of holistic and use it across the methods. Or it is always, because when you prepare a generic, then specific constructive feedback will not be available to the learner. So it is desirable that we prepare specific rubrics for different methods of assessment which we integrate into our teaching learning process. Now, once you, any questions so far? And now we move on to Hanji. Ji, there Uh, is a question. Ji. yeah, ma'am, I'm not sure whether my question is No, correct or no, not, no, no issue. You can ask. Hanji, but you know please. that I'm just wondering that is it possible to have a rubric less assessment? Rubric less assessment. नहीं, rubric less assessment तो नहीं होनी चाहिए. Because when, हाँ जी, आप मैम मैं कहिए. आपको एक एग्जांपल बताता हूँ हाँ जी, बताइए. मतलब देयर मेनी एग्जांपल्स फॉर we evaluate our PhD students at the end of semester, जी, and sometimes we give them unsatisfactory grade. हाँ, Not always, but sometimes we give unsatisfactory grade. हाँ. We don't tell the exact reason that you have not done वही this तो bad. वही तो when in the beginning of the session I said that we don't use rubric, the student is least satisfied or less satisfied with the assessment. He doesn't know
why grade A or B or C or why unsatisfactory label has been assigned to him, and he is not able to get hold of his strengths and weaknesses. And this kind of assessment is not dependable, not because subjectivity creeps in. So, rubric less assessment will cause more problems for the student, for the teacher, for the community to understand the level of. So, तो ऐसा होता है when we used to be assessed, maybe very few teachers used rubrics, but it is always good to give the criterion of assessment to the learners. अब say for example, मुझे पता है कि when I'm going to make a presentation in the class, मेरी कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल, मेरा रेपो विद द ऑडियंस, या ये सारी चीजें हैं विच आर गोइंग टू बी असेस्ड. तो मैं क्या करूंगी, पहले से ही आई ट्राई टू एडहेयर टू दिस क्राइटेरियन एंड इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू दीज क्राइटेरिया. तो रूब्रिक जो है, द नॉलेज हैज टू गो टू द learner, and learner can improve upon while he is performing the task. He is keeping that criteria in mind, ki how he is going to be assessed. ma'am, should I give you the second example of जी rubric less दीजिए assessment? दीजिए दीजिए. टेम्पररी फैकल्टी इंटरव्यू हुआ, हाँ. 3 4 5 लोग सिलेक्शन पैनल में बैठे हुए हैं, हम्म. and they have interviewed 10 15 20 people, they have selected 3, है ना? they नहीं, अब यहाँ only पे हम only the हम committee देखिए, knows that नहीं 3 नहीं को क्यों नहीं, लिया और ऐसा 17 है, को क्यों नहीं नहीं, लिया उनको नहीं पता. हाँ देखिए ऐसा है, ऐसा So है. these are the examples of rubric less नहीं assessments. नहीं, ये रूब्रिक लेस करते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन हुई ना कहीं मेरे मन में रोष रोष आया कि उन्होंने जो 3 सेलेक्ट किए, मे बी आई डोंट एग्री विद देम, है ना? एज अ पर्सन आई डोंट एग्री, एंड 3 members विल हैव वेरी डिफरेंट रेटिंग गिवन टू द 3 इंडिविजुअल. बट अगर वही, अब देखिए ये डिपेंड करता है, जो आपकी कमिटी होती है, दे आर नॉट गोइंग विदाउट द क्राइटेरिया. मैंने जितनी अपने इंस्टीट्यूट में इंटरव्यूज अटेंड की हैं at the later stage after I became professor and then was involved in that process, तो जो भी चेयरपर्सन होते थे, बिफोर द इंटरव्यू एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता था कि अगर इतने मार्क्स में से हमने मार्क्स देने हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं विच वी आर गोइंग टू इवेल्युएट. तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स. The committee always take cognizance of some of the criteria which, and हमारे तो यहाँ पे written है. It is not only verbal understanding between the two people, but it is a written criteria which is available, and you can go and rate the people accordingly. तो satisfaction ज्यादा है. जी डॉक्टर निगार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, you have जी raised. मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रूब्रिक रहने से बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है, देखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असेसमेंट एंड फॉर द लर्नर्स की मेरा मेरा इस वजह से मार्क्स कट हुआ और इस वजह से मेरी नहीं मार्क्स कट हुई. वही दैट बात है. ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट बी लाइक फेवरेटिज्म नहीं रहेगा तब. फेवरेटिज्म भी नहीं और सब्जेक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं हाँ आती आपकी. जी. जी सर. And I have actually checked using rubrics, and I Yes, have seen vast difference. I have checked both ways, and I have seen that I am more honest with my students if I am using rubrics. very So true. with sir, Another, like I can't नहीं, maybe imagine. he has raised these questions, उसकी हाँ उसके पीछे का रीजन समझ आ रहा है, बट हाँ ये होता था, ये आज हाँ. भी हो रहा है. Not all the faculty members, as you have seen, 20% of us do not make use of rubric. And you Oh. can see students are more dissatisfied with this kind of assessment. तो हमारा पर्पस क्या है एज अ टीचर? हमारा पर्पस ही ये है टू सेटिस्फाई द लर्नर. तो अगर लर्नर सेटिस्फाइड है, इज कन्विंस्ड that I got B because these were the flaws in my performance, he will certainly make an effort to improve upon that. Or I can, as a teacher, guide my student to overcome those flaws. ये तो आप एग्री करेंगे ना? Thank you. Yeah, ma'am, Okay. actually, जी. I agree with that if the rubrics based assessment is there for the students,
जी that gives certainty okay. and satisfaction, transparency. सर But हर हाँ I will give another example हाँ or same example of rubric less assessment. Like नहीं, रूब्रिक लेस नहीं होना चाहिए. अगर जहाँ पे आप रूब्रिक बना सकते हैं, kindly use the rubric to make it more objective. ma'am, can you take my example, ma'am? जी I will give you श्योर example. श्योर, आप If बताइए. if I am a selection committee member, हाँ right, and we are selecting temporary faculty members, जी so I have been given that that आप बीटेक का इतना मार्क्स दीजिए, एमटेक का इतना दीजिए, पीएचडी का, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का, टीचिंग स्टाइल का, दैट वो है है ब्रेकअप है, क्राइटेरिया. 100 में से कितना क्या देना है. हाँ But that practically what we do, that we assess 20 people, and out of that 20 हमारे दिमाग में पता है ना कि ये 20 में ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. And ultimately that committee is going to discuss, तुम नाम बताओ. So top 5 नाम नहीं, आ जाते हैं, फिर we ये give marks. देखिए मार्क्स हम बाद में दे देते हैं. ठीक है देखो मैम. ऐसा है, ये गलत है, ये गलत है. मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस व्हेन यू नो द पीपल, व्हेन यू नो द पीपल, है ना, आप जानते हैं उनको. यू हैव फेमिलियरिटी, बट देयर मे बी फ्यू पीपल हु आर नॉट नोन टू यू. They get outrightly rejected because you know the 5% and you have shortlisted those 5%. अब उन 5 को आप जानते नहीं हो. Even a person who has been performing well, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन आके बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो क्या फिर भी आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं? नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए. तो होता क्या है, अगर आप बिना रूब्रिक्स के चल रहे हैं तो आपकी सब्जेक्टिविटी क्रीप्स इन और आप उस बंदे को ले लेते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस दिन. तो दूसरा बंदा जो आपको नोन नहीं है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में तो आप नहीं जानते हो. तो व्हाई डू यू आउटराइटली रिजेक्ट दैट पर्सन? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे. दिस हैपेंस, दिस हैपेंस, बट इस चीज को हमें बाहर एलिमिनेट करने की जरूरत है टू मेक आवर क्राइटेरियन मोर ऑब्जेक्टिव. इसीलिए रूब्रिक्स लाने की जरूरत है वेयर एवर इट इज पॉसिबल. एंड वेन एवर यू इवेल्युएट और असेस, it is always possible to specify the criteria. कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लेके ही चलते हैं ना. हम मोबाइल लेने भी जाते हैं तो we look to the features, we look to the shape, we look to the aesthetics of that product and so on. तो इसी प्रकार जब ह्यूमन परफॉर्मेंस की बात आती है, it is much more important that we have a criterion against which we do this. Now friends, अगर ये एक जरूरत है हमारी और इतने सारे हमारे असेसमेंट, बिकॉज नाउ द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिटन टेस्ट. We have assignments, we have class tests, we have term papers, we have presentations, we have communication skills, lead, especially जब soft skills की बात आ जाती है, वहां पे it becomes very very essential that we should have rubrics. तो rubrics बनाने के लिए there is a process, but I'll first give you a task where we can take up and experience the steps which can be followed in design of rubrics. तो मैं ये मेरे साथ साथ आप चलेंगे. I'll be giving instructions to you. How do we go and develop the rubric? So I have pasted the link in your chat box. Please access the rubric form 2, knitted rubric 2. I hope you are able to access. G. Yes. Okay. So what I'll request all of you, देखिए, you have to go by the instructions. Now here, the very first question you will come across is, please think of oral communication skills, right? I'm taking just a performance on oral communication skill and tick mark the aspects or key performance indicators you would like to assess in oral communication. तो नीचे दिए गए हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. आप उन इंडिकेटर्स को टिक मार्क करिए
जो आप असेसमेंट क्राइटेरिया का भाग बनाना चाहेंगे. My question to you is, if all this is before you, can you think of the major 4 or 5 criterion against which you can club these uh, key performance indicators? जब हम कहते हैं content accuracy, relevance of content, organization of content, all these 3 parameters are related to content. So I can have one criterion as content, right? So content becomes one criteria. When you look to volume, pace, rapport with the audience. Now, what is it? What is it? Volume, pace, rapport with the audience. क्या होता है? कहाँ इंक्लूड करते हैं इन चीजों को? Hello? This is paralanguage, Yes. which is associated with oral communication, right? Yeah. When you go to vocabulary, pronunciation, grammar, these are the 3 parameters which are related to what? Which aspect of The oral linguistic aspect, the La- language. Very good, very good. The language. So you can say language is another key performance indicators, and these are the sub aspects of the language. That is what kind of vocabulary a person uses, what is the pronunciation, correct है, incorrect है, या grammatically how is the syntax and the semantic. तो वो syntax की बात करें. Okay, then body movement, eye contact, and facial expression. This is referring to what? The physicality dimension of the person. So you can now see that when we are designing rubric, the very first step in rubric is to find out first the which kind of performance we are going to assess. Is it oral communication? Is it the assessment? Is it going to be the leadership skill? Is it going to be ability to work in teams? Or is it going to be creative problem solving ability on the part of the learner? And then try to enlist the criteria, that is the various criterion or key performance indicators. So तो यहाँ पे क्या आ गया? Content, then you had volume, pace and rapport was क्या था? Paralinguistic criterion, then language was the criterion, then the physicality is another dimension of that. So ये आपका पहला step, second step and third step. Now, if you have attempted question number 2, now here write any other aspect you would like to include. I'll come to that when I go to the responses. The next step is, now think of the rating scale you will use to rate various aspects selected for the different aspects. Now, say for example, अब ये जो आप different rating scale नहीं use करेंगे for different aspect, you will have a common rating scale for the various aspects. So अगर आप 3 point rating scale use करना चाहते हैं तो as I said, good, average, poor. अगर आप 5 point scale करना चाहते हैं तो excellent, very good, good, satisfactory and poor. वो आपके 5 level आ जाते हैं. या आप करना चाहते हैं कि बच्चा अभी बिल्कुल नॉविस है, डेवलप कर रहा है, अकम्प्लिश कर लिया है, या ही इज एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टीचर, तो उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी वेरी हाई है. यू कैन यूज different rating scales depending upon your understanding of the criterion for assessment. तो आप जो सेकेंड चीज डिसाइड करेंगे, आप रेटिंग स्केल डिसाइड करेंगे. अब अगर आपने रेटिंग स्केल यूज कर लिया है तो फॉर ईच एस्पेक्ट,
तो आपने जैसे यहाँ पे लिया कंटेंट एक्यूरेसी, तो कब कहेंगे कि दिस इज द गुड कंटेंट एक्यूरेसी? विद एवरी technical concept or principle is correctly included, when all the aspects have been correctly included, तब आप कहेंगे कंटेंट एक्यूरेसी. कब आप एवरेज देंगे? when majority या most of the content is correct, technically correct, but there are certain things which have been missed, तो आप एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं. जब मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इज नॉट इनकरेक्ट, तब आप क्या दे रहे हैं? उसको पुअर परफॉर्मेंस का लेबल दे रहे हैं. इसी तरह जब आप कहते हैं रेलेवेंस, तो whether the content included was relevant to the topic which has been selected. So अगर all is relevant, आप उसको गुड कह रहे हैं. मेजोरिटी ऑफ इट वाज दिस या मोस्ट, तो आप एवरेज कह रहे हैं. जब पार्ट ऑफ इट अ वेरी मतलब आप कह सकते हैं पुअर, कब कहेंगे? मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप उसको पुअर की परिभाषा. फॉर ईच आस्पेक्ट नाउ यू आर ट्राइंग टू write the description when the content accuracy is going to be labeled good, average or poor. अब ये जब आपने कर लिया, तो आपका क्या है? आपका एक स्केल तैयार हो जाता है. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली सबमिट. अभी मेरे पास बहुत 19 ही आए हैं सिर्फ रिस्पॉन्सेस. क्या हो गया? आप इसको कंप्लीट करो एंड सबमिट. अब देखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू, अभी ये प्रोसेस है, आपने किया, आपके हाथ से निकलता है. इट इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू हैव द करेक्ट rubric. It is always good to join hands with other faculty colleagues, sit back, brainstorm with respect to the criterion, and then try to enlist the rating scale, and then start writing the descriptors for various aspects. So this is not one attempt which you need to make. This can be that you can constitute a committee at the department level, or maybe even at the institute level. When you are thinking of assignment, you are thinking of term paper, you have a committee for assignment, term paper. You have a committee for seminar and presentations. You have a committee for thesis and dissertation. You have a committee for oral communication skills, or team building or leadership. So you have various committees working in the institute to design 1 to 2 rubrics with respect to those, and then get the validation of that data. ये भी नहीं है कि आप बना के simply use कर लो. You can validate the rubric by administering or using that rubric on a sample, and एक class में use करके देखिए what is the response, or maybe 2-3 people can rate the, so expert rating for one particular performance. So 3 people are there to rate the performance, and you can see how the scores correlate with each other. Agar high correlation hai, then it is a reliable instrument to be used for that purpose. Agar usme low correlations aate hain, then you have to see where there is significant difference between the two raters or more than 2 raters, and then you try to make modifications in those descriptors. उसमें change लाने की जरूरत है. Now here, when you look at this, let me just give you, this is an example which was available. I just picked up that and given you the task from that. अब ये देखिए था rubric for oral communication. तो आपकी डिलीवरी में उसने उसको ले लिया है वॉल्यूम, पेसिंग एंड रेपो, एंड उसने 3 पॉइंट स्केल यूज किया है: बिलो प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट एंड बियॉन्ड प्रोफिशिएंट. देन किसको उसने बिलो प्रोफिशिएंट कहा है? जब द स्पीकर, इट वाज डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर,
The pace is neither too slow nor too fast. जब स्पीकर हैज लिटिल कनेक्शन विद द ऑडियंस, तो इसका मतलब जब हम कहते हैं कि डिलीवरी शुड, उसकी वॉल्यूम चेक करें, उसकी पेसिंग चेक करें, उसकी रेपो चेक करें, तो दैट मीन्स पहली चीज ऑडिबिलिटी, ऑडिबल होना चाहिए. सेकेंड चीज उसकी पेस अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एंड अ पर्सन शुड बी एबल टू मेंटेन अ रेपो. सो प्रोफिशिएंट. अगर बियॉन्ड दिस है, दैट मीन्स स्पीकर वेरीज वॉल्यूम टू फिट द मैसेज. दैट मीन्स अगर कोई सिंपल चीज ले रहा है तो मे बी उसकी जो रेट ऑफ डिलीवरी है बढ़ जाती है, या जब वो कोई जो वॉल्यूम है वो वेरी कर रही है, उसकी स्पीकर वेरीज वॉल्यूम टू फिट द मैसेज. तो डिफिकल्ट चीजें हैं तो वॉल्यूम, या उसने हाईलाइट करना है तो वॉल्यूम बढ़ जाती है. अगर नॉर्मल चीज बोल रहा है तो वो एक समांतर पेस वॉल्यूम में बात करे. पेस उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टीज ऑफ द मैसेज. तो जैसे जैसे पेस, आपकी सिंपल चीजें हैं तो पेस बढ़ती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स चीजें आप एक्सप्लेन करते हो पेस आपकी कम हो जाती है. So whether that kind of rhythm he is able to maintain, audience is clearly engaged with the speaker. तो ये हमारी क्या है, उसने descriptor, each cell is referred to as a descriptor. तो इसी तरह जब आपने content की बात की, content of the speech is inaccurate. इनएक्यूरेट है या इनकम्प्लीट है, या जब नॉट रेलेवेंट है टू द टॉपिक, और सीक्वेंस ऑफ आइडियाज इज कंफ्यूजिंग, तो बिलो प्रोफिशिएंट उसने उसको दिया है. तो एक्यूरेसी, रेलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशन, तीन चीजें हैं. जब तीनों प्रेजेंट है प्रोफिशिएंट है, जब तीनों में एक्सेल कर रहा है बियॉन्ड प्रोफिशिएंट है. तो इसी प्रकार देखिए, vocabulary, pronunciation और enunciation he has taken, grammar and physicality में body movement, eye contact and facial expression. So ये आपका एक example है of the speech. What are the key performance indicators? What are the ratings? Proficient, below proficient, proficient and beyond proficient. Let me just give you another. ये एक आपका होलिस्टिक रूब्रिक है जहां पे उसने लिया आइडियाज आर थॉरोली एक्सप्लेन्ड, हाईली कोहेरेंट राइटिंग. अब ये राइटिंग असाइनमेंट पे है. ऑलमोस्ट नो ग्रामेटिकल एरर. तो 90 से 100 नंबर में उसको दे सकते हैं. तो वेरिएशन कितनी रही? 10 मार्क्स की. among the people who are rated excellent, even there you can have variation. किसी को आपने 92 दिए, 95 दिए, 99 दिए, but now the subjectivity has been minimized. इसी तरह गुड में ideas are explained, coherent writing है, few grammatical errors हैं, 80 to 89. 70 to 79 ideas are partially explained, somewhat coherent, several grammatical errors. Needs work, उसको अभी काम करने की जरूरत है. Ideas are poorly explained, incoherent writing, many grammatical mistakes. तो ये आपके, अब मैं इसको ना जाते हुए the one which I developed, तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं. वो ये तो आपको मिल जाएंगे जब आप जाते हैं इंटरनेट पे. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर accessible. Let me just give you an example of creative problem solving. So, this, when you need to assess this, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके जो की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. अगर आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके रिलेटेड ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन द पर्सन शुड कलेक्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस. देन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, उसको देख एनालिसिस करने की जरूरत है. Then he should be able to develop a creative solution. And fifth criterion was taken as implements creative solution to the problem. तो आप एक और चीज देख रहे हैं कि all these criterion
or key performance indicators have not been given equal weightage. So 10% वेटेज दी गई है प्रॉब्लम को, आइडेंटिफिकेशन, 5% वेटेज दी गई है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को, 10% वेटेज इज गिवन टू एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, solution development को 25%, implements creative solution to the problem 25%. So जितने भी आपके मार्क्स हैं उसकी वेरिएशन है. अब ये देखिए, अब देखिए फिर क्या करा, अब 4 point, बिकॉज दिस वाज एन एग्रीमेंट, ऑल 4 knitters agreed on using a 4 point scale. So we had very good, fair and यहाँ पे हमने लिखा था नीड्स इम्प्रूवमेंट, पुअर नहीं यूज किया था, तो यहाँ पे मैंने पुअर लिख दिया है. तो आप देख सकते हैं कि व्हेन वी से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, so whether all the key elements of the problems were accurately identified and the person understood the relationship between them, तब उसको very good बोला. अगर उसने मेजर की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए और रिलेशनशिप अंडरस्टैंड की, गुड कहा. इफ यू कुड आइडेंटिफाई सम ऑफ द की एलिमेंट्स, देन फेयर बोला. लेकिन रिलेशनशिप उसने समझी. जब उसने आइडेंटिफाई नहीं किए की एलिमेंट्स, तब उसको हमने पुअर परफॉर्मेंस दी. देन इसी तरह आप देख रही है कलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. तो अगर रेलिवेंट, सफिशिएंट एंड क्रेडिबल सोर्स से उसने इंफॉर्मेशन ली है, डेटा, देन ही इज गिवन वेरी गुड. अगर उसने रेलिवेंट ली है, सफिशिएंट ली है और मेजर डेटा क्रेडिबल सोर्स से लिया है, तो गुड दिया है. अगर उसने रेलेवेंट, आप देखिए आप, और समवॉट सफिशिएंट, उसने रेलेवेंट तो लिया पर वो एडिक्वेट नहीं था, और समवॉट क्रेडिबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, तो फेयर दिया. अगर पुअर है तो जब उसने इररेलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो भी इनसफिशिएंट था एंड वाज नॉट फ्रॉम द क्रेडिबल सोर्सेज, तब हमारे उसका पुअर जाएगा. नाउ दिस इज 5 key performance indicators, 4 point rating scale, descriptors given. तो जब ये हम यूज करके बच्चों को असेस करेंगे, अगर सपोज करिए मुझे 3 मिले हैं, तो मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है, मैंने सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है. सो देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव बीन लेफ्ट आउट, एंड ये एक मुझे फीडबैक मिल गई, तो मुझे और एक्सप्लोर करना है कि इस प्रॉब्लम को और कैसे बेहतर बनाना है व्हेन आई आइडेंटिफाई अदर एलिमेंट्स. इसी तरह जब आप करते हैं तो ये एक फीडबैक मिलती है कि कौन से वीकनेसेस हैं विच नीड टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन. अभी इसी तरह देखिए, इनोवेशन छोड़ लेते हैं, ये टीम वर्क का था. तो टीम वर्क के लिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि what contribution of each member of the team, उसकी contribution to ideas, whether the person fulfills the individual responsibility or not. तीसरी चीज, whether the person interacts with others and give respect to the other individuals or individuality of others, whether the person who's a team member supports other when needed, whether a person, because there are conflicts and problems, number of decisions to be made, so whether the person is able to facilitate the process of decision making and resolving conflicts. तो अब देखिए यहाँ पे जब हम contribution to ideas कह रहे हैं, अब देखिए in every team it happens, there are people who would initiate the idea, जो अपने लेवल पे अपने आइडियाज देंगे ओरिजिनल. देयर मे बी फ्यू who have listened or heard or read the idea and would like to share that idea. There may be others who only show agreement or disagreement with the ideas expressed by others. And then there may be 1 or 2 people who do not contribute or who do not express their
एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद, वो चुप करके बैठे हैं, बाकी सब कर रहे हैं काम। तो आपके देखिए वेरी गुड, जब ओरिजिनल आइडियाज आए, जब उसने जो पढ़ा लिखा सुना देखा, जो भी आइडिया उसने दिया वो दिया, तब गुड हो गया। जब उसने सिर्फ एग्रीमेंट एक्सप्रेस किया विद द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अदर, तो आपने उसको फेयर दिया। जब उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो पुअर दिया। इसी तरह जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, सम पीपल एक्सीड्स द स्टैंडर्ड्स, तो आपने उसको वेरी गुड दिया। जब उसने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली तो आपने गुड दिया। जब उसने कुछ जो आपके कंप्लीट कर ली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स, तो फेयर दिया। और जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की तो आपने उसको पुअर दिया। सिमिलरली फॉर इंटरेक्शन विद अदर्स, अब देखिए बहुत लोग होते हैं बड़ी ईगो लेके आते हैं, तो दे डोंट इंटरेक्ट विद अदर्स, लेकिन टीम इज विच इज अ कोहेरेंट वन, and it requires that we respect others and we interact with others with due recognition given to them. So जब आपकी unconditional acceptance होती है other members की, then it is very good, the team works. So always interact with others, give respect and recognition to others, very good. Most of the time interacts with other with respect. तो देखिए अब ये फ्रीक्वेंसी वाली आ गई हैं कि कितनी बार वो इंटरेक्ट करता है, उसके बेसिस पे आपने उसको वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर रेट किया। तो सपोर्ट भी ऐसे है, मांगने पे भी नहीं देते, मांग के दे देते हैं, या कुछ बिना मांगे ही अपनी सपोर्ट दे देते हैं। तो उसी प्रकार से दिस इज द वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर। लाइकवाइज हेल्प्स इन डिसीजन एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, जब पूछा जाता है तभी डिसीजन मेकिंग करते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते हैं। हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस, नीदर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग नॉर रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स। तो एक लास्ट आपको दे देती हूँ रिसर्च का, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड लाइक टू सी रिसर्च का। अब देखिए ये रिसर्च का बनाया था हम लोगों ने। तो फर्स्ट थिंग इज identification and definition of the research problem, that's very important. Then जो आपकी रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए, तो हमने ये रिसर्च क्वेश्चंस लिखे हैं, यू कुड आल्सो से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। देन रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट किया, रिसर्च प्रोसीजर्स जो आपने सेलेक्ट किए, then collection of data and information, then analysis of data and information, then interpretation of results and research report जो आपने फाइनली बनाई है। ओ तो अब ये देखिए कि जो सिलेक्शन एंड डेफिनेशन है, तो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट की और उसको डिफाइन किया, तो उसका वेरी गुड है। अगर आपने सिलेक्ट एंड डिफाइन अ सिग्निफिकेंट, एक्सप्लिसिटली असिग्निफिकेंट, तो उसको हमने 5 दिए। जब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ली है तो 3 दिए। कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया सिलेक्ट एंड डिफाइन, तो 2 दिए, पर सिग्निफिकेंट नहीं है। और जब आपने एब्सोल्युटली डिफाइन ये है फेल टू एडिक्वेटली डिफाइन इट, तो आपने पुअर कहा है। तो रिसर्च क्वेश्चंस का नंबर और एक्यूरेटली उसको स्टेट किया या नहीं किया है, वो 2 चीजें देखनी होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली दिया गया है। सो यू कैन सी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, द रेटिंग एंड द डिस्क्रिप्शन। तो आप जो सब्जेक्टिविटी है उसको एलिमिनेट करते हैं, इवन इंटरेटर कोरिलेशंस, आप इंटरेटर रिलायबिलिटी आपकी बढ़ती है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, और तो दिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वी गो टू, ये भी नहीं। तो अब देखिए ये आ गया। तो जब आप कोई ऑलरेडी अवेलेबल है रूब्रिक्स, तो आपने क्या देखना है कि जो रूब्रिक है, द आउटकम यू आर इंटेंड टू मेजर, उसको मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है,
और जो उसे उसके बाहर दायरा है उसको एड्रेस करता है या नहीं करता, तो जितना लिमिटेड है टू द लर्निंग आउटकम उसको लीजिए। डज द रूब्रिक कवर इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस? तो असेसमेंट में क्या होना चाहिए, वो चीजें आपने क्राइटेरिया जो आपके माइंड में है, वेदर दैट क्राइटेरिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दैट रूब्रिक और नॉट। Criteria reflect current conceptions of excellence in the field. तो अब जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क्स। तो जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क्स दे रहे हैं, can that be one of the dimensions? Are we able to implement interdisciplinary projects in our institution? तो एक्सलेंट क्या होएगा? जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम ले रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर रहा है, जहां पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो एक्सलेंस के जो कंसेप्शन है, whether that is being met by the rubric, are the categories or scales well defined? कहीं ऐसा तो नहीं है कि there is still overlap between the ratings which you are using? तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि proficient क्या है, beyond proficient क्या है, या below proficient. These should be distinct categories where there is lesser chance of misplacing a candidate in a category, or misplacing a performance in a inappropriate category. Then a clear basis for assigning score at each scale, वो तो हो गया, इसी के साथ आ गया. Can the rubric be applied consistently by different scorers? तो जब हम rubric बनाते हैं, तो it is not that we can do a sample assessment involving 2 to 3 persons for rating the same and then find out the correlation between the set of scores given by different raters. तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये reliable है या नहीं है. Can the rubric be understood by students and parents? क्योंकि rubrics जब आप use करते हैं, and there is need to inform the learners beforehand of the criteria, so eat and use that language which will be understandable to the learner and likewise to the outside people. Is the rubric developmentally appropriate? तो ये तो आपको देखना है कि उसकी प्रोग्रेशन ठीक है. कैन द रूब्रिक बी अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ टास्क? अगर वैरायटी ऑफ टास्क पे एप्लीकेबल है, तो इट इज गोइंग टू बी that kind of rubric you can use, right? जितनी जेनरिक, बट देर आर स्पेसिफिक टास्क, तो उनके लिए आपको स्पेसिफिक रूब्रिक ही चाहिए. It is not essential that it should be applied to a variety of tasks. Is the rubric fair and free from biases? तो जब आप validate करेंगे, you can provide to the students also. Say you give the rubric to 20 students, और वो rate करें performance को, या वो देखें कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे biases आ सकते हैं. This, or the expert rater can do this. Is the rubric useful, feasible, manageable, practical? तो अगर implement हो सकता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता. तो just going back to the process, एक बार आपको process भी ये देख लीजिए. What we have said: select a performance to be assessed, identify the performance criteria, key performance indicators आप लेते हैं, फिर उसके बाद आप सेट करते हैं परफॉर्मेंस लेवल जो आपने किया, गुड, एवरेज और पुअर, और प्रोफिशिएंट, बिलो प्रोफिशिएंट एंड अबव प्रोफिशिएंट. क्रिएटिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन, सो आप हर सेल का डिस्क्रिप्टर लिखते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू रेट द परफॉर्मेंस गुड और एवरेज और पुअर on the various key performance indicators. Then you develop the scores कि आपने 3-1 की रेटिंग करनी है, 5-3-1 की करनी है, 4-3-1 की करनी है, या आपने what weightage are you going to give to criterion 1, criterion 2, criterion 3,
क्राइटेरियन 4। अब ये सारा जब कर लिया, ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया, तब आ गया इवेल्युएट द रूब्रिक। एंड इवेल्युएट करने के बाद आप वैलिडेट करने की जरूरत है। use the rubric on a sample and then see iterator reliability, take the feedback from the student, take the feedback from the raters, and try to bring in the modification in the rubric accordingly. तो कहने को तो ये सिंपल चीज है, लेकिन it is a time consuming thing. But as I said, you can think of having committees working on that. Other people can validate it, so that will help. Over to the audience members. Thank you. Ma'am, I wanted to know like outcomes. Can you give some example of a project outcomes so that we can have rubrics and outcomes together matching? मैं एक मिनट, आप देखिए, आप जब कल वाली खोलूं प्रेजेंटेशन, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हेन यू लुक टू द सेकंड वन, problem analysis, right? What does it include? Identification, formulation, so which is covered. If you are actually given a research project to your students and you are likely to evaluate, the rubric should have this as one of the criterion performance, key performance indicator. That is the very first two things: identify, formulate. That means select and define a research problem, right? Then when you come to the review research literature, so that can be another key performance indicator in the rubric, that is review of relevant literature. And there you can include whether the person has gone in for uh, identifying or referring to primary, secondary sources of information and preliminary sources of information, whether the person has the for the time period for which the research literature has been reviewed, uska criteria aapko dekhna hoga ki whether the time period which has been taken is adequate or not. Then you are likely to see whether the person has written integrative review or not. Then you have to see whether the person has been able to identify the gaps in research correctly or incorrectly. ठीक बात है, रूब्रिक में वो So, पार्ट आ I जाएगा. got it. ठीक है जी. देन आप Okay, ma'am. Thank you. देखिए, देखिए जब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं. तो दिस मे बी इन रिसर्च प्रोजेक्ट, दिस मे बी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस मे बी इन द प्रोजेक्ट वर्क जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनैरिटी which you need to take into account if it is going to be excellent. Otherwise, it's a solution to the complex problem. तो यहाँ आपकी आ जाती है मैनिपुलेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ द, ये आपका है कंडक्ट, तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द इंफॉर्मेशन which may be lab based, which may be field based. तो accordingly अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो here we are concerned with कि बंदे ने जो सैंपल कलेक्ट किया था, जो मेजरिंग टूल्स कलेक्ट किए थे, जो डेटा कलेक्ट किया था, तो उसकी क्वालिटी के बारे में हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाएंगे. एंड अगर लैब में है तो आपकी मॉडर्न टूल यूसेज, जो आपने अगर यू हैव यूज्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ समथिंग, तो उसका यूज आ जाएगा. अदरवाइज लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो आप करते हैं वो आ जाएगा. अगर सोशल साइंसेस की बात करें तो आपके टूल्स की बात करते हैं हम, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एंड सो ऑन, उसकी बात करेंगे. ठीक है. अब जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एविडेंट इन रिसर्च प्रोजेक्ट. तो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल, सो राइटिंग स्टाइल ऑफ द पर्सन, उसने रिसर्च रिपोर्ट को रिटन कम्युनिकेशन यू कैन चेक. इफ यू आर टेकिंग अ वाइवा वो से of the learner, then you can check the oral communication and assess his understanding of the whole work which is carried out.
तो थ्रेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप चेक कर सकते हैं थ्रू वाइवेबो से, एंड देन कि उसने कंक्लूजन्स ठीक ड्रॉ किए हैं या नहीं किए हैं, एंड सो ऑन। और अगर ये चीजें आएंगी आपकी, Yeah, okay, ma'am. We can derive from the POs. That means the course ये outcomes can be derived from. हाँ जी, ये एक चीज है। पीओ आपके सीओज भी है। So if somebody is taking a project related to software, say software engineering, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कोर्स आउटकम्स है ना, try to match those course outcomes while you are developing a rubric. Keep in mind the program outcome as well as the course outcome, as you have been doing mapping of these for other assessment procedures. तो उसी तरह रूब्रिक ड्राइव करते हुए अब देखिए, जब आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इज इट एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और टीम वर्क, तो उसका कंपोनेंट भी आता है उसमें, isn't Yes, it? yes. If it is a teamwork, then teamwork is one key performance indicator. तो उसने टीम में कैसे अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू अदर्स उसने करा कि नहीं करा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, Okay, thank you, ma'am. माय प्लेजर। हाँ जी, हाँ जी Again, डॉक्टर, I will come to that same question again. हाँ जी बताइए। That you know that when we are रुब्रिक sitting in the लेस, selection रुब्रिक, committee, हाँ जी, तो you know that पहले तो हम क्राइटेरिया डेवलप करें, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट डेवलप करें, रूब्रिक करें. हाँ जी। That is the first challenge, and once अब it अब is अब done, देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग इन द इंटरव्यू बोर्ड, यू कंसिडर देम टू बी एक्सपर्ट इन देयर ओन वे, राइट? एंड उसमें आपको मे बी इफ यू कैन हैव इवन अ होलिस्टिक रूब्रिक, दैट विल डू। तो आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं कि हर चीज का डिस्क्रिप्टर दे रहे हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्सपर्ट्स। अगर डिस्क्रिप्टर दे के आप बना सकते हैं एनालिटिक एंड दैट इज अवेलेबल, इट्स ओके, दैट विल बी मोर यूजफुल। बट होलिस्टिक रूब्रिक तो कभी भी कहीं भी डेवलप कर सकते हो आप जी, okay. ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज यूज द साइनर्जी। तो साइनर्जी आप यूज करेंगे तो 1+1 = 11, तो आप दो लोग भी बैठ के बनाएंगे, यू कैन हैव अ गुड वन, गुड वन। Yeah, so मैम मीन्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि यू नो दैट जो एक्सपर्ट सोकॉल्ड एक्सपर्ट कमेटी है, तो उनको पहले तो डिस्क्रिप्टर्स डिसाइड करना पड़ेगा, और एवरी कैंडिडेट का दे आर नहीं, मैं सपोज टू फिल डिस्क्रिप्टर, मैं कहती हूँ दे आर छोड़ सपोज लीजिए टू फिल द नंबर्स डिस्क्रिप्टर। ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स. नहीं नहीं, आप होलिस्टिक बना लीजिए कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में कौन आ रहा है, वेरी गुड की कैटेगरी में कौन आ रहा है, गुड की कैटेगरी में, और यहाँ 3 पॉइंट रेटिंग स्केल है, 5 पॉइंट। आई लीव टू द कमिटी बिकॉज देर इज नो नथिंग विच कैन बी 100% करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये वी लीव टू द पीपल। ओनली थिंग इज there is consensus among the members of the selection committee, better will be the outcome. And ma'am, can it be done after the interview, No, or it no, has to be not done at all, before? not at all. Before a person is interviewed, the criterion must be made clear. Ma'am, actually, you know that once interview is done, so all the experts, they know that how many people have ना come and ना who is ना, the good, फिर तो कोई and पर्पस ही they नहीं will do हल होता ना। consensus and they will do नहीं it. नहीं, फिर तो कोई पर्पस नहीं हल होता। मैंने किसी और क्राइटेरिया पे उसको जज किया, आपने किसी और क्राइटेरिया पे, हाउ डू वी रीच द कंसेंसस? सो इफ द क्राइटेरिया वाज द सेम, देन यू कैन रीच द कंसेंसस। Okay. Ma'am, all these rubrics and other things which are is being done to reduce that uncertainty and bring, you know, transparency, and remove ऑब्जेक्ट, subjectivity, objectivity, जी bring जी, बिल्कुल objectivity. बिल्कुल बिल्कुल, Yeah, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए ही, दैट्स व्हाई आई टाइटल द प्रेजेंटेशन एनहांसिंग ऑब्जेक्टिविटी yeah. एंड So रिलायबिलिटी ऑफ if we have faith on our experts, so what we can do is that even after the interview, we can have ना some ना consensus ना ना, that आई out डोंट of this एग्री 20, these 5 people सर। are good. सर आई डोंट एग्री, देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया मे बी। देखिए, अंडरस्टूड तो होता ही है सबको। जब आप जा रहे हो, आप कहते हो उसकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज वन विच यू आर गोइंग टू असेस, whether the person is knowledgeable about the current developments, उसके लिए आप उसके देखते हो। आप देखते हो कि उसकी communication, because if teaching में आ रहा है तो that is very very important,
आप उसका कॉन्फिडेंस असेस करते हो, whether he'll be able to handle the class or handle the questions coming from the students and so on. And maybe you are also looking at the creativity of the person, whether he'll be able to use any innovations in teaching, learning and evaluation and so on. Chalo, ab ye, yeah, he is able to have the research bent of mind कि he can give impetus to research. Say for example, these are the 5 elements which we select. तो ये अब 5 आप भी एग्री करो. अब मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर, तो अब मैंने कहा कि ये 5 हैं. We are going to rate people in 3 categories: excellent, very good, good. पुअर तो कोई नहीं है, जो आ रहे हैं, जो एलिजिबल है, वो चलो मैं मान के चल रही हूँ एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड है. अगर करना है तो और भी कर लेंगे. चलो, अब मैंने कहा कि एक्सलेंट में हमने कहाँ से कहाँ तक स्कोर देना है. तो आपने डिसाइड कर लिया 90 से 100 के बीच में हम स्कोर दे देंगे अगर एक्सलेंट है. अब 90 से 100 में स्कोर देना है, तो what weightage you want to give to subject matter, what weightage you want to give to research bent of mind, another your communication skill, another innovative है कि नहीं है, creative है कि नहीं है. तो ये आप outrightly इसको डिसाइड करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा. उससे क्या होगा कि जो सब्जेक्टिविटी है वो कम हो जाती है. So everybody is rating on 5.5 criterion एंड उसको 3 पॉइंट या 5 पॉइंट में रेट कर दिया उसने, अकॉर्डिंगली गिवन द नंबर. अब जब आप एंड में कंसेंसस पे आ रहे हो, यू आर टेकिंग द 3 इनटू अकाउंट. तो जहां पे वेरिएशन ज्यादा है, दैट मींस दैट केस इज डिस्प्यूटेड. ठीक है ना? तो जहां पे आपके कंसेंसस आ रहे हैं उसके ऊपर आप जा रहे. दिस इज वेयर थैंक यू मैम, थैंक यू. होना चाहिए मेरे हिसाब से. इट हेल्प्स, तो एलिमिनेट हो जाते हैं आपके बायसेस एंड सब्जेक्ट.